Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, quickly pause the video and open your social 5 books. I hope everybody has opened the book. So my dear students, as you know that we are on unit number 4, that is history, and today I am going to deliver lecture 4. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So quickly tell me that on which river Roman civilization started? It was along Tiber River in Italy. And name the famous rulers of Rome. It was Julius Caesar, Augustus. These were the famous rulers of Rome. And how was the social system was Rome? It was divided into 2 main classes, which was patricians and plebeians. So my dear students, in today's lecture we will describe the salient features of again Roman civilization. आज हम इनके art, science को discuss करेंगे. How was it? So my dear students, let's quickly move forward. How Greeks heated their rooms. So my dear students, previous civilization जो हम इससे पहले पढ़े थे, Greek civilization. So आपको पता है कि वो अपने कमरों को किस तरीके से heat up करते थे. So they invented the सेंट्रल हीटिंग सिस्टम. जैसे कि मैंने आपको मॉडल भी बनाकर दिखाया था दैट दे इन्वेंटेड द सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, जो कि अंडरग्राउंड जो है वो हीट होती थी और उसके बिना पर जो है वो कमरे गर्म किए जाते थे. सो रोमन्स मेड सम न्यू इन्वेंशंस और सम यू कैन से दे मॉडिफाइड द इन्वेंट. तो एक दफ़ा ये हो चुका था सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, लेकिन रोमन्स ने इसको मज़ीद मॉडिफाई किया एंड दे कॉल्ड इट हाइपोकस्ट. इन्होंने इसको हाइपोकस्ट का नाम दिया और इन्होंने इसको मॉडिफाई किस तरीके से किया कि इन्होंने इसके नीचे पिलर्स बनाए और इसके बाद जो कमरा ज़्यादा हीट जिसको चाहिए होती थी इट वाज मेड नियर द बर्निंग रूम और उसके बाद जो है इस तरीके से ये गर्म करते थे अपने कमरों को. सो हाइपो मीन्स अंडर एंड कस्ट मीन्स बर्न्ड, यानी कि ज़मीन के नीचे कोई चीज़ जलाई जा रही है और उसकी वजह से गर्मी प्रोवाइड की जा रही है. दैट्स वाई दिस सेंट्रल हीटिंग सिस्टम ऑफ रोम was known as hypocast. So my dear students, now I request you all to please open page number 49 in your social 5 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Clothing. So सबसे पहले हम रोमन्स की क्लोथिंग डिस्कस करते हैं कि इनकी आउटर वेयर किस किस्म का होता था. Toga was clothes worn by the people of Roman civilization, but it has had variety such as the rich people wore white togas made up of wool or linen. The senators wore white togas with the purple strip. However, on the mourning occasions, the people wore black togas. It was difficult to wear, so later toga was replaced by tunic. So my dear students, अगर आप इनकी क्लोथिंग को देखें तो इनकी क्लोथिंग जो है वो वाइट टॉगा जो है वो पहना जाता था, लेकिन हर क्लास जो है वो भी इसको मुख्तलिफ पहनती थी. अमीर लोग जो है उनका मुख्तलिफ किस्म का होता था और ये एक कपड़ा होता था जिसको ये रैप करते थे एक स्पेसिफिक स्टाइल से, और हर तरह की कलरिंग जो है इसके अंदर जो है वो डिस्क्राइब करती थी इवेंट्स को भी और लोगों की डेजिग्नेशन को भी. इसके अलावा क्योंकि इसको पहनना और कैरी करना बहुत मुश्किल था तो लेटर इट वाज रिप्लेस्ड बाय अ ट्यूनिक. इसको एक ट्यूनिक से जो है वो एक फ्रॉक टाइप या एक लंबे चोगे से जो है वो रिप्लेस किया गया. सो रोमन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. रोमन आर्ट और आर्किटेक्चर किस किस्म का था? लेट्स हैव अ लुक. रोमन आर्ट वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक्स. सो रोमन्स जो हैं इनका आर्ट बहुत ज़्यादा ग्रीक से इन्फ्लुएंस था. जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ग्रीक्स के सेंट्रल हीटिंग सिस्टम को इन्होंने मज़ीद मॉडिफाई किया इनटू हाइपोकास्ट. द रोमन्स ब्रॉट मैनी ग्रीक आर्टिस्ट विद देम फॉर द मेकिंग ऑफ स्कल्पचर्स इन ग्रीक स्टाइल. दे ऑल्सो अडॉप्टेड द स्टाइल ऑफ एंशिएंट इजिप्शियंस, ईस्टर्न आर्ट, द जर्मन्स एंड द सेल्टिक्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि रोमन्स इतने इन्फ्लुएंस थे ग्रीक से तो ये वहाँ से बहुत सारे सनतकारों को और आर्टिस्ट को लेकर आए जिन्होंने यहाँ पर आकर बहुत सारा आर्ट का काम किया इन रोम. और इसके अलावा इनके आर्ट के अंदर आपको इजिप्शियन स्टाइल भी नज़र आएगा बिकॉज लेटर इजिप्ट ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ रोम. हमने देखा था क्योंकि इजिप्ट भी रोम का हिस्सा बन गया था रोमन एम्पायर का. So the sculptures made by Romans were the copy of Greek sculptures. The most prominent feature of the Roman art was the bust. It was the sculpture of the head only. The rich people put such sculptures of their ancestors in their home. So my dear students, Romans जो हैं ये Greek art से बहुत influenced थे तो इनके sculptures उन्हीं के डिज़ाइन में बने हुए होते थे, लेकिन इनका एक स्पेशलिटी ये थी कि ये पूरे sculpture नहीं बनाते थे. They used to make the head sculpture only, यानी कि ये सर का
यानी कि जो फेशियल स्कल्पचर है ये वो ज़्यादा बनाते थे, और अक्सर जो नोबल लोग हैं वो अपने एंसेस्टर के जो बस्ट्स हैं उनको अपने घर में रखते थे. They had many pictures on colored tiles known as mosaic. The best thing about mosaic was their survival for a long time. The mosaic were used to decorate floors and walls. So my dear students, mosaic जो है वो टाइल्स के ऊपर बनाया जाता था, डेकोरेटिव टाइल्स होती थी जो कि तामीरात के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और मोज़ाइक आर्किटेक्चर जो है वो आजकल भी इस्तेमाल किया जाता है. Celtics are ancient Indo-European people. So Celtics जो है इनसे भी इनका आर्ट इन्फ्लुएंस था, और ये कौन थे? They were the Indo-European people. So they had introduced arc and dome-shaped buildings. The former church named Pantheon has the largest concrete dome structure in the world. It is now located in Italy. So my dear students, as I told you कि इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, जिसके अंदर कोलेसियम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ कोलेसियम, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनकी बिल्डिंग में आर्च शेप जो है आर्किटेक्चर है, और सर्कुलर जो है ये बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं इन्होंने, सेमी सर्कुलर बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, और इनकी सीटिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती थी कि एट अ टाइम इसमें मोर देन 60,000 पीपल कुड सिट. Science. The Romans also had a great contribution to the science. They had made concrete roads that are still present after more than 1,000 years. They also used sundials to estimate time and later on made portable versions of them. They also used other tools including manual drills, metal spikes and measuring tools. The credit of introducing the glass blowing techniques goes to Romans. They introduced the hanging oil lamps, glass windows and many other objects made up of glass. They also practiced an indoor plumbing system for sewerage. They carried waste to the river Tiber through the system. So my dear students, as you know कि जैसे ग्रीक्स ने बहुत सारी इन्वेंशंस की, तो रोमन्स वर ऑल्सो यूज टू इन्वेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स. इन्होंने मेडिसिन पे बहुत काम किया, टूल मेकिंग पे बहुत काम किया. इसके अलावा दे ऑल्सो इन्वेंटेड विंडोज़, ग्लास ब्लोइंग टेक्निक्स. इसके अलावा मेजरिंग टूल्स इन्होंने इन्वेंट किए. सैंडियल जो है, जो कि टाइम बताता था एंशियंट टाइम्स में, उसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया, और इसके अलावा इन्होंने मूवेबल सैंडियल जो है वो भी बनाया. सो दिस इज हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ साइंस. So these were some of the tools that were used in ancient Greeks, which were metal spikes, measuring tools and oil glass lamps. In the glass blowing technique, glass is being heated to form different shapes of object. So my dear students, glass blowing क्या होता है कि शीशे को हीट करके उसको मोल्ड किया जाता है मुख्तलिफ शेप्स के अंदर, and that's how they used to make different things from the glass. So my dear students, for evaluation, quickly answer the following question. How was Roman architecture similar to Greek architecture? So my dear students, as I showed you कि इन्होंने भी semi-circular और circular buildings बनाई. So Greeks also made such kind of buildings, और Romans were greatly influenced by the Greeks. इनके sculpture और इनका art और इनका architecture जो है, it was greatly influenced by them. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and your class, and then how Roman architecture was similar to Greek architecture. Write it down. What were aqueducts? Aqueducts were the ducts used to bring fresh water to the city. What is the meaning of hypocast? Briefly explain its function. So hypocast means burnt, and it was the central heating system of the Romans. What were the contribution of Romans in the field of science? So they invented lots of medicines, tools, measuring tools, sundials. So these were the inventions of the Romans. Okay, my dear students, for homework you will move forward towards the page number 50, and you will do home reset and analysis number 3. So some of the inventions of Roman you have studied above. Seek out at least 3 more inventions and discoveries of ancient Rome. Paste the pictures on a chart paper and also write brief history. Present it in your class. So my dear students, कुछ inventions हम Romans की पढ़ चुके हैं. Some more are hypocast, surgical tools, aqueducts, roads, bridges, Roman numerals. So these are Roman numerals. ये अभी तक यूज होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. So these are Roman numerals. And even the newspapers, जो अखबारात आप आजकल देखते हैं, these were invented by the Romans. इन्होंने सबसे पहले खबरों को लिखकर तकसीम करना शुरू किया था, and formally the newspaper got invented.
So my dear students, now is the time for the homework. That is home activity number 5. What is the most interesting thing you find in Roman architecture? Give reason for your reason. So my dear students, आपको Roman architecture में सबसे ज़्यादा fascinating चीज़ या interesting चीज़ क्या लगी? मेरे ख्याल से the Colosseum was the most interesting thing about their architecture कि इसके अंदर arch shaped windows थी and it was circular और इसकी seating capacity जो थी वो 60,000 plus थी. Okay, my dear students, on page number 60 for homework, you will do question number 1. Compare the contribution of Romans and Greeks in the field of science. So, my dear students, आपने Romans और Greeks की जो field of science में contributions है, आपने उनको comparison करना है, मवाजना करना है. ठीक है कि उन्होंने क्या क्या किया, Romans ने क्या किया and Greeks ने क्या किया. You will divide the page into 2 and that's how you will do it. So my dear students, this will be your homework, and the wrap up of the lesson is today we have discussed that what the Romans have done in the field of arts, architecture and in the field of science. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.